Okay, so good morning students. Welcome all of you in the maths class for standard 7. I am your maths teacher and let's begin the maths. So without wasting time, we are moving on our exercise 3.2. Now lastly we completed our exercise 3.1 with question number 8. Now we are moving on question number 2 of the 3.2. See, I am not taking question number 1 because question number 1 is same as question number 2. So only the difference is you have to find the mode and median only. In this question you have to find mean, mode and median. The data is given, but the thing is different. In the first question there are the maths test marks are given out of 15 students, which is the out of 25. So here the runs scored in the cricket match by 11 player is as follows. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट मैच का सिनारियो दिया हुआ है. देयर इज़ अ क्रिकेट मैच प्लेड बाय द 11 प्लेयर्स और उनके स्कोर यहाँ पे दिए हुए 11 प्लेयर के 11 स्कोर्स है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. सो 11 प्लेयर स्कोर different स्कोर दे डिड in the match. Find the mean, mode and the median of the data are they same. मतलब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मीन फाइंड करने सारे डेटा के, मोड फाइंड करने सारे डेटा के, मीडियन भी फाइंड करना है. और उसके बाद द क्वेश्चन इज आर द थ्री सेम, मतलब ये तीनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द mean of the data. So mean of the data is equal to sum of the data divided by number of data, or you can say that sum of the score divided by number of the players. Whatever you want to write, you can write like this: sum of the score divided by number of player. That also you can write that. Now sum of the data is what? जो भी डेटा दिया है उनका सबका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. सो 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15. So that is a 11 score. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 players. So that's why it is divided by 11. और नंबर ऑफ द डेटा कितने हैं, डेटा 11 डेटा है. सो दैट्स वाई डिवाइड बाई 11. अब सबका यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. सो लेट्स डू द एडिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 15 120 50 then 100 then 80 then 10 15 8 10 and 15. So now what we have to do, we have to just add them. So how can we add them? See, 6 + 5 is 11, 11 + 5 is 16, 16 + 8 which is 24, 24 + 5 which is 29, 9 goes here, 2 goes up, 2 + 2 is 4 + 1 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 8 is 18, 18 19 20 21 and 22, 22 2 goes here and 2 goes carry goes up, 2 + 1 3 + 1 4. So 429 is the addition of the total data. So 429 divided by 11. Now can we divide 429 with the 11? Let's find out. 429 divided by 11. So 11 1s are 11 4s are 44. So we have to take with 11 3s are 33. Now 33 plus
7 is 40, 7 plus 2 is 9, so 33 plus 9 is 44, 42. Now put down the 9. Now 11 9s are 99. Answer is 0 0. So now our answer is what? 429 can be divided by 11 with 39. So this is our what? This is the mean of the data. So mean of the data is 39. So here we found out the first answer. Now let's find out the mode and the median. Okay, so now let's find out the mode and median. So first of all, mode. How can you find out the mode, or what is mode? Mode is the frequency of the number or frequency of the data. So here most repeated number is what? See, 6 को देखें, 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है? Only one time. 15 here, 1, then 2, then 3. So 15 is repeating 3 times. So I am writing here 15 is repeating how much time? 3 times. Okay, 120 is repeating 1 time only. Now 50 is repeating, this is also 1 time. 100 is repeating 1 time. 80 is repeating 1 time. 10 is repeating 2 time. यहाँ पे कितनी बार हो रहा है? So 10 is repeating 2 time. और 8 is repeating कितनी बार 8 हो रहा है? Only 1 time. So यहाँ पे मैक्सिमम कौन रिपीट हो रहा है? 15. सो 15 क्या होगा? 15 इज द मोड ऑफ द डेटा. क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है. सो मोड मतलब क्या? जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो होगा तुम्हारे डेटा का मोड. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 15. सो 15 इज द मोड ऑफ द डेटा. अगर 10 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होता तो 10 इज द मोड ऑफ द डेटा. लेकिन यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है? 15. So 15 is repeating maximum time. How much time? 3 time. So that's why the mode of the data is 15. Now the second question, mean done, mode also done. Now the last part, median. Now what is the median? Median is the middle number of the data which is lies in the middle. मतलब वो middle में उसके पीछे भी सेम नंबर होंगे और आगे भी सेम नंबर होंगे. सेम नंबर मतलब आगे 4 नंबर होंगे तो पीछे के साइड भी 4 ही नंबर होंगे, 5 नंबर नहीं हो सकते. तो आगे 6 नंबर है तो उसके लेफ्ट साइड 6 नंबर है तो राइट साइड भी 6 नंबर होगा, वो नंबर सेंटर में होगा. तो ऐसा नंबर हम यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर वाला नंबर नहीं ले सकते. उसके लिए पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में. सो लेट्स अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट नंबर इज 6. So 6 is taken, after that 8, after that there is a 10. How many times? 2 times 10. After that now 10 is also taken, 8 is also taken. Now after 10 there is a 15. How many times? 3 times. 15, 15, 15. Now 15 is done. यहाँ पे मार्क कर दे तो हमको पता चलेगा बाकी कौन बचा. अभी बचा 15 के बाद क्या आएगा उससे बड़ा? यहाँ पे 18 है, सॉरी 80. सो 80, तो 80 इज ऑल्सो टेकन. नाउ व्हाट लेफ्ट? 80 के बाद आया 100 और आफ्टर 100 द लास्ट इज 120. सो हियर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ count the data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but the data is 11, so someone is left. See, 6 is taken, 8 is 1 time, 10 is 2 time, now 15 is 3 time. Then after 15, yes, the one data is left, 50. 50 is left here, 50. After that 80. So here now see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 डेटा हमारे पास आ गए. सो फ्रॉम द स्मॉलर टू बिगर. अभी इसमें सेंटर नंबर कौन सा है? जो भी बीच में, एग्जैक्टली बीच में. सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेटा है तो उसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 एंड 5. सो ये हो गया हमारा सेंटर नंबर. अभी यहाँ पे देखो
दिस एंड दिस। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट साइड पे भी 5 नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5। राइट साइड पे भी कितने नंबर है? 5 नंबर है, और सेंटर में हमारा 15 है। सो 15 इज द, सो द मीडियन इज इक्वल टू 15। समझ में आ गया मीडियन कैसे होगा? मीडियन इज 15। नाउ इट इज वेरी इजी। सी मोड वी फाइंड आउट विच इज द मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर। मैक्सिमम रिपीटिंग नंबर 15 था। मीडियन हमने फाइंड किया विच इज ऑल्सो 15। नाउ द थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, आर द थ्री सेम? मतलब मोड, मीडियन एंड मीन, तो तीनों का आंसर सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियन हमको मोड कितना मिला, सॉरी मीडियन कितना, मीन कितना मिला? मीन मिला 39। So we find out mean 39, median 15 and mode 15. So the three are not same. Mode, median and mean are not same. You can say that mode and median are same, but mean is not same. So your last answer is no, the three are not same. So this is the question number 2. I hope you are guys understand properly. It is very easy question, nothing different or nothing hard in that. Only the simple addition and division is there. Just only you have to remember the method or remember the formula. What formula when use? मीडियन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली रखना पड़ेगा। अगर मोड फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोड फाइंड करना है तो डेटा को चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज योर मोड एंड मीडियन। नाउ मीन इज व्हाट? सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। जो भी डेटा दिया हुआ है उसको टोटली ऐड करो और कितना डेटा दिया हुआ है वो उससे डिवाइड करो। सो यहाँ पे हमने टोटली ऐड किया और डिवाइड किया विद द 11। क्यों? क्योंकि 11 प्लेयर्स थे और 11 प्लेयर्स का डेटा था। सो दैट बाय 11 डेटा इज देयर। सो नाउ सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डेटा। सो सम ऑफ द डेटा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा करने पर हमको मिला मीन 39। सो दैट्स हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so students, moving on next question. What is the next question? Question number 3. The weight of 15 students of a class are in order to 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40 and so on. So the question is what we have to find out? We have to find again mode and median. Again mode and median find out करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? Is there मोर देन वन मोड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला गया कि मोड में आंसर एक से ज़्यादा आता है या एक से कम आता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मोड, और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे मीडियन। सो यहाँ पे हम एक चीज़ सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंज द डेटा in ascending order। सो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करेंगे। लेट्स डू दिस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट डेटा इज वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट डेटा 38। सो स्मॉलर देन 38 इज 35, smaller than 35 is 32, smaller than 32 is no, so the first digit is 32. So put the mark on it, 32 is taken. Now after 32 the bigger number is 34 is there, 33 is there, no, then 34 is there, no, 35 is there, yes, 35. So is there any 35 here? Again check it, is there any 35 here? No, 35 nahi, 35 repeats only one time. So now after 35 the bigger number is what? 36. So 36 is here, yes, 36 is here. So let's write down 36. Now 36 दूसरी बार है, चेक करो 36, no, no, so 36 repeat only one time. Now after 36 is 37.
So is there 37? Yes, 37 is there. So I'll write 37. So 37 repeating more time or one time? Let's find out. 37 one time. No, 37 is only one time. Now 38. The next digit is 38. Okay, so 38 is repeating one time. Now another 38, can you see? Yes, here and here. So take this 3, 38. Now 38 is repeating 3 times. Now after 38, 39. Can you see 39 in the data? No. So 39 after 39, 40. 40, yes, 40 is here. So took the 40. See any 40 in there? No, only 140 is there. So it's repeating one time. Now after 40, 41 is there? No, no 41. So 42 is there? Yes, 42 is there. So make a round on that. So you will understand that I took the data. Now 42 एक ही बार रिपीट हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, चेक करो यहाँ पे, नहीं, 42 is there. After that 43 is there? Yes, एक बार है, दो बार है, तीन बार. So 43 and 43. After that अब सारे नंबर्स लिए, 43 के बाद 44 नहीं है, सीधा आएगा 45. 45 repeats one time. After 45, 46 is not there, so 47, and the lastly 50. So all the data taken and all the data arranged in ascending order. So यहाँ से देखो 32, 35, 36, 7, 8, then 40, 42, 43. So total data is how much? How many students are there? 15. So 15 data should be there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 data is proper here, and it is already arranged in ascending order. Now what you have to do? The first thing I have to find mode. So mode means the frequency of the data, and the frequency of the data means the most repeating number here. So here 32 is repeating one time, 35 one time, 36 is also one time, 37 one time. Now 38 repeating 3 times, 40 one time, 42 is also one time, 43 repeats 3 times, then 45 also one time, and 47 and 50 also one time. So the mode of the data is 38 and 43. Why 38 and 43? Because both the number are repeating 3 times or maximum times in the data. So you can say that the 38 and 43 is the mode of the data. Now we find out the mode of the data. Now we have to find out the median of the data. So how can we find out the median? See, for the median there is a one formula is there, n plus 1 divided by 2. If the data is given in the odd number मतलब 3, 5, 7, 9, 11, that's how odd number में डेटा दिया हुआ हो तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पे डेटा ऑड नंबर में दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा है? 15 इज ऑड नंबर, सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. इवन नंबर पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इवन डेटा पे ये अप्लाई नहीं होगा. अगर सपोज यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ था तो वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला, बट यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है, 15 इज अ ऑड डिजिट, सो ऑड डिजिट में यू कैन यूज़ दिस. सो नाउ हाउ कैन यू यूज़ दिस? n मीन्स व्हाट? n मीन्स द number of data. How many students are there? 15. So 15 data is there, so 15 plus 1 divided by 2. So here only put the value of n. n की वैल्यू क्या होगी? जो कि हमारा टोटल डेटा है. कितना डेटा दिया हुआ है? 15 डेटा दिया हुआ है, 15 weights of students. So 15 students weights are there, so 15 plus 1 is what? 16 divided by 2. So 16 divided by 2 is what? 8. So 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ा 16. So 8 is not your median. The 8th number in the data is your median. So यहाँ पे अब ascending order में जो हमने सेट किया हुआ है डेटा उसमें से 8th number is your median. So यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 number जो आपका है which is 40. So the 8th number you have to write like this. The 8th number
So 8th number is what? Which is 40. So your median is 40. कैसे 40? अगर डायरेक्टली यू हैव टू फाइंड आउट, सी 1 2 3 4 5 6 7 ऑन द लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 on the right side, and the middle there is a 40. So 7 data on the left side, 7 data on the right side, and in the middle there is a 40. So median is 40. So you can directly find out 40 median, or you can use this formula, but only when the data is given in even number, or sorry, in odd number. So whenever the data is given on odd number, you can use this formula n plus 1 divide by 2. So you can directly find out the number of the, which number of data is the median of the data. So here the 8th digit or 8th data, which is the 40, is the median of the data. So here we found out mode and median. Now the second question, first question is done. Second question, is there more than one mode? यहाँ पे मोड मोर देन वन मिला, यस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 38 भी 3 बार रिपीट हो रहा था और 43 भी 3 बार रिपीट हो रहा था, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों 3 बार रिपीट हो रहे हैं. तो मोड ऑफ द डेटा इज 38 and 43. So yes, there is more than one mode in the data. There is a 2 mode in the data. So you can write like this for the question number 2. Yes, there are more than one mode. So yes, there are more than one mode in the given data. So that's how you can solve the question number 3. Now we are moving on our next question. Okay students, so moving on our next question, question number 5. Tell whether the statement is true or false. Now here the statement is true or false. The mode is always one of the number in data. So यहाँ पर mode जो है, it is always the one of the number in data. Of course, yes, true. अब true किस लिए? See, suppose I will take one example here. 4 2 2 6 7 8 8 8. Now there is a data, random data, right? Now mode is what? Mode is a maximum repeating number or frequency of the data. So यहाँ पर maximum repeating number देखो, repeating number एक तो 2, कितनी बार repeat हो रहा है 2, और 8 कितनी बार repeat हो रहा है 3. So the 8 is also from the data and 2 is also from the data. So yes, you can say that the statement is true. The mode is always one of the number in data. That is true. Yes, सपोज यहाँ का ये डेटा का मोड क्या हुआ 8. सो 8 ऑलरेडी डेटा में अवेलेबल है तभी तो हमने मोड फाइंड आउट किया. अदरवाइज मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोड फाइंड आउट करने के लिए रिपीटिंग नंबर हमको पहचानना पड़ेगा डेटा में. सो रिपीटिंग नंबर, मोस्ट रिपीटिंग नंबर कौन सा है यहाँ पे इस डेटा में? 8. सो 8 हमारा हो गया मोड. सो मोड डेटा में अवेलेबल है ऑलरेडी. सो यस, यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि मोड डेटा में ऑलरेडी अवेलेबल होता है या नहीं. सो यस, इट इज़ अवेलेबल. सो दैट इज़ ट्रू. सेकंड क्वेश्चन, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. सॉरी, यस, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा. अब यहाँ पे बोला गया कि मीन भी वन ऑफ द नंबर ऑफ डेटा है. मीन का मतलब एडिशन ऑफ द डेटा डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेटा. सपोज ये डेटा ले लो, सपोज वी विल डू फॉर दिस डेटा. सी 8 निकाल दो. 1 2 3 4 एंड 5 डेटा के लिए हम मीन निकालेंगे. 4 + 2 + 2 + 6 + 7 डिवाइड बाय 1 2 3 4 एंड 5. सो यहाँ पर 4 + 4 is 8, 8 + 6 is what? 8 + 6 is 24, 14, 14 + 7 is 22, 21. So 21 divided by 5. So 21 divided by 5 gives any decimal number. So any decimal number is given in that
No, there is a no decimal number in this. So you can say that mean is not one of the number in data in always. So always mean जब, so the data answer is false. Why false? Because mean ऐसी चीज़ है जो कि हम पूरे डेटा का एडिशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेटा करते हैं, उसके बाद जो आंसर मिलता है वो होता है हमारा मीन. सो मीन डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं होता. वो कहाँ होता है? वो हम एडिशन और डिवीज़न करने के बाद फाइंड आउट करते हैं, जो कि डेटा में ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता. समटाइम्स इट इज़ सेम हो सकता है, समटाइम्स डेटा में जो डेटा वन ऑफ द डेटा इज़ इक्वल टू मीन, लेकिन वो समटाइम्स होता है. सब और एवरी टाइम देर इज़ अ नॉट पॉसिबिलिटी टू the mean is one of the number in data, so every time it is not possible, so that is false. So now third question, the median is always one of the number in data. Yes, of course, true. median obviously, मीडियन मतलब डेटा का बीच वाला नंबर जो कि मीडियन होता है. तो डेटा में मीडियन अवेलेबल होगा तभी हम उसको मीडियन फाइंड आउट करेंगे डेटा का, राइट. अगर डेटा में मीडियन अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसको कहाँ से फाइंड आउट करें? तो यस, the median is always one of the number in data, right. Now the last question, the data given 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 and 9 has the mean 9. मतलब यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो गिवन डेटा का मीन फाइंड आउट करेंगे तो 9 आएगा. अगर आता है तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर नहीं आता तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो लेट्स फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेटा. मीन इज इक्वल टू व्हाट? द सम ऑफ द डेटा. 6 plus 4 plus 3 plus 8 plus 9 plus 12 plus 13 plus 9 divide by how many data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So first of all we have to do addition of the data. So let's do here. 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 and 9. So add them. सो 9 plus 3 इज़ वॉट? नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे आते. 6 plus 4 हो गया 10, 10 plus 3 10 plus 8, 10 plus 8 इज़ वॉट? 10 plus 8 is 18, 18 plus 3, 18 plus 3 is 19, 20, 21, 21 plus 9 is 30, 30 plus 2 is 32, 32 plus 3 is 35, 35 plus 9, 35 plus 9, 36, 37, 38, 30, 9, 40, 41, 42, 43 and 44. So 44 goes 4, 1, 4, 5, 6. So 64 is your answer. So 64 divided by 8. So 64 divided by 8. Now as you know 8 8s are 64. So the mean of the data is what? The mean of the data is 8. But here in the question the data given हैज़ द मीन 9. सो यहाँ पे मीन कितना मिल रहा है हमको फाइंड आउट करने पर? वी फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेटा इज 8. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो दैट्स हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 5. द रेस्ट ऑफ द लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस द सेम एज द यू हैव टू फाइंड आउट द मोड, मीडियन एंड द मीन. मोड, मीडियन, मीन फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है. मोड फाइंड आउट करना है तो रिपीटिंग नंबर्स चेक करो. मीडियन फाइंड आउट करना है तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो, फिर बीच वाला नंबर सिलेक्ट करो विच इज़ योर मीडियन. नाउ मीन फाइंड आउट करना है तो मीन फाइंड आउट कैसे करेंगे? मीन फाइंड आउट ऐसे करेंगे, सारे डेटा का एडिशन करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, जो कि डिवीजन और करने के बाद जो आंसर आता है वो दैट इज़ द मीन ऑफ द डेटा. सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट मोड, मीडियन एंड मीन. सो दिस इज द end of the exercise 3.2. Now in next video lecture we will continue with exercise 3.3. Thank you.